Hello students, we will discuss a theorem on sum of two squares. The statement of a theorem is prove that a positive integer n can be expressed as sum of two squares if and only if each prime factor of n, which is congruent to 3 modulo 4, occurs to an even power. What is the meaning of this theorem? First of all, we will conclude the meaning of this theorem. What is the meaning of this theorem? So we say that n can be expressed as a sum of two squares, and it is possible to write n as a square plus b square if each prime factorization of n. We know that every number has a prime factorization. हर एक नंबर दी प्राइम फैक्टराइजेशन होंदी है. फॉर एग्जाम्पल 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, it is a prime factorization. 9 can be written as 3 the square. 8 can be written as 2 cube. You can take any other number. 15 is equal to 5 into 3. So this n will have a prime factorization where there may be even factors which can be written as 2 raised to power alpha. Then numbers p1, p2, pr, then the numbers q1, q2 and qs. These are those primes which are congruent to 1 modulo 4, and these are those primes which are congruent to 3 modulo 4. Every prime number has this kind of a property. For example, 3 is a prime number. We divide 3 by 4. What is the remainder? 3. So this 3 is congruent to the 3 modulo 4. The remainder is this. You can take any other prime number. 29 is a prime number. Divide it by 4. The remainder is 1. So this you may check that every prime number is either equivalent to 1 modulo 4 or is equivalent to 3 modulo 4. Now what is our question? Question is that n can be expressed as a sum of two squares. N can be expressed as sum of two squares if and only if each prime factorization of n, which is congruent to 3 modulo 4, occurs to an even power. ਜਿਹੜੀਆਂ these are those congruents which are congruent to 1 modulo 4 ना, these are those prime factors. ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ prime factor है which are congruent to 3 modulo 4, और ਜਿਹੜੇ 3 modulo 4 ਨਾਲ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ they must occur in the even power. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ factor ਨੂੰ divide ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ the part of this, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ 8 ਆਇਆ, 8 is a 2 cube. 8 is a 2 square into 2. ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿਊਬ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ. ਜਿੱਦਾਂ 9 ਹੈ, 9 is a 3 square. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਨੇ which are congruent to 3 modulo 4, they must occur to the even power. This we have to show. So we will suppose that n can be written as sum of two squares, then we will try to prove that the prime factorization of n, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ congruent to 3 modulo 4 ਹੈ, it must occur to a even power. So suppose ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ that n can be written as a sum of two squares. Let n is x square plus y square, where x and d are not having a common factor d. ठीक है. So since x and y ਦਾ common divisor ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ d ਹੈਗਾ, so x can be written as dA. x ਤੇ d ਦਾ common divisor x ਦਾ common y ਦਾ common divisor d ਹੈ, यानी कि x d ਨੂੰ x ਨੂੰ d डिवाइड करता है एंड आंसर इज सम इंटीजर. इसे तरीके नाल y ਨੂੰ d डिवाइड करता है एंड आंसर इज सम इंटीजर. सो दिस x is dA and y is dB, and where a and b have the common divisor 1. ठीक है, greatest common divisor is 1. नाउ n कैन बी री रिटन एज एक्स स्क्वायर ਦੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ डी ए आ गया, डी स्क्वायर ए स्क्वायर एंड डी स्क्वायर बी स्क्वायर. सो n इज डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज़ अ फैक्टराइजेशन ऑफ n. ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? फैक्टराइजेशन ऑफ n. एंड ਇਹ फैक्टराइजेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ? इट मे हैव even values powers, or it may have a those primes which are congruent to 1 modulo 4 and those primes which are congruent to 3 modulo 4. तो n ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ that will be congruent to 1 modulo 4, the other will be congruent to 3 modulo 4. ठीक है, now we will discuss what happens. So a square plus b square ਜਿਹੜਾ ਹੈ that can be written as n, therefore n is a square plus b square, where a comma b ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ greatest common divisor ਹੈ that is 1. So this type of representation is known as a proper representation, and there is a theorem about the proper representation कि if there is a proper representation then x square is congruent to minus of 4 modulo 4n. This equation has a solution. This theorem is mentioned below. ठीक है, so this is written as इसनों ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So consequently this x square is congruent to, इसनों 4 ਨਾਲ डिवाइड ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, -1 modulo 4. This also has a solution. ठीक है, this also has a solution.
नाउ इफ p इज़ अ प्राइम, अगर p ऐसा प्राइम है जोड़ा n ਨੂੰ डिवाइड करता है, then p will also satisfy this equation. If p divides then x square is congruent to minus of 1 modulo p. This equation will also have a solution. Now x square minus 1 is congruent to x square minus 1 modulo p. This equation will have a solution. Now we need a solution of this equation. कि what is the solution of this equation? So this equation is x square plus 1 जिसनु p should divide. X square plus 1 must be divisible by p. So now numbers are of two types na, either they are even numbers or they are odd numbers. So suppose there is an even number 2 square plus 1 will be 5 and 5 ਨੂੰ p ਜਿਹੜਾ divide ਕਰੇਗਾ is not possible. Division is proper, यानी कि ਜਿਹੜਾ divide ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आंसर ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that should be a इंटीजर, ठीक है। तो आप कहने कि इट इज़ डिवीजन साड़ी प्रॉपर होगी। सो इफ ईवन फैक्टर इज़ देयर दैन देयर इज़ नो डिवीजन एंड इफ ऑड फैक्टर इज़ देयर दैन साढ़े को की आंदा 3 स्क्वायर प्लस 1 जिमें 9 प्लस 1 इज़ 10। तो इनू ऑड फैक्टर जोड़ा है जो असी एक्स नू ऑड लैके चलते हैं तो यह सम प्लस 1 करके ईवन बन जाता है एंड एवरी ईवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। सो p इज़ इक्वल टू 2 यदा सोल्यूशन हो गया। दूसरा केस है जो ऑड की जगह पर जो एक्स नू असी ईवन लैके चलीए, इफ एक्स इज़ ईवन दैन मेरे को 5 आ गया एंड अगर असी p नू 1 मॉडलो 4 मन के चलीए दैन असी नीचे 4 लैके चलीए दैन 4 डिवाइड करेगा 5 नू दैन रिमाइंडर इज़ 1। So this means p is congruent to 1 modulo 4. So there are two types of values for p. p may be 2 or p is congruent to 1 modulo 4। ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, n is d square n, ਜਿਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ congruent ਹੈਗਾ 1 modulo 4 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ डी स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਈਦਰ ਦੇ ਆਰ congruent to 1 modulo 4 ਔਰ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟਰਸ ਆਰ congruent to 3 modulo 4। तो ਜਿਹੜੇ 1 modulo 4 ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, n ਨੂੰ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 3 modulo 4 ਦੇ congruent ਦੇ ਮਸਟ ਡਿਵਾਈਡ डी स्क्वायर। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ डी स्क्वायर ਨੂੰ डिवाइड करना है सो दीज फैक्टर्स मस्ट अकर टू अ ईवन पावर। आई विल रिपीट, अपन ये देख लिया कि द फैक्टर्स विच आर congruent to 1 modulo 4 they divides n and दो फैक्टर्स विच विल be congruent to 3 modulo 4 क्योंकि there are two possibilities of the prime and those factors which will be congruent to 3 modulo 4 they must divide d square, so therefore they will occur to the even power. Now we will discuss converse of this result. Conversely, we suppose that each prime factor of n that is congruent to 3 modulo 4 occurs to an even power. That is ਅਸੀਂ suppose कर लेने कि n is d square into n where a o वाला फैक्टर हैगा जिस दे prime factors are congruent to 3 modulo 4 and they are occurring to the even power. ਇਹਦਾ मतलब n ਉਹ वाला prime हैगा which is not congruent to 3 modulo 4. This is a prime which is no, ठीक है, दिस n हैज़ नो प्राइम फैक्टर विच इज़ congruent to 3 modulo 4 क्योंकि प्राइम नंबर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਈਦਰ द प्राइम नंबर्स आर congruent to 1 modulo 4 और दे आर congruent to 3 modulo 4। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ n ਦੇ those factors which are congruent to 3 modulo 4 occurs to an even power and this is that factor which is not congruent to 3 modulo 4 and n has its own prime factorization। n is also a number, इसकी भी prime factorization लिख ली, पर इस prime factorization च असीं वो वाले factor नहीं लिखे जेड़े कि congruent to 3 modulo 4 ने, क्योंकि it is not congruent to 3 modulo 4। इस च सिर्फ वो वाले factor ने which are congruent to 1 modulo 4। So what we have, असी ये देख लिया कि 2 raised to power n can be written as sum of 2 squares in the previous theorems। असी ये भी देख लिया कि all those primes which are congruent to 1 modulo 4 can be uniquely expressed as sum of 2 squares। दोनों ही थ्योरम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ this means कि ਜਿਹੜਾ n फैक्टर है ਇਹ भी लिखा जा सकता है sum of 2 squares ਦੀ फॉर्म 'ਚ क्योंकि n is made up of 2 raised to power n and it is made up of those primes which are congruent to 1 modulo 4। This number can be written as a sum of 2 squares। All these numbers can also be written as a sum of 2 squares। Therefore ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ प्रोडक्ट करांगे that n can also be written as a square plus b square। For example ਜਿਹੜਾ n ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 2 raised to power n into the some prime factors। 2 raised to power n ਨੂੰ ਅਸੀਂ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स की फॉर्म 'ਚ लिख लिया। इस तरीके नाल असीं इन्हां नूं सम ऑफ स्क्वायर्स की फॉर्म 'ਚ लिख लिया। से इसनूं असीं a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर लिख लिया। आपां जस्ट की करांगे वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द फैक्टर्स एंड एवरी फैक्टर विल बी अ स्क्वायर।
तो सम ऑफ टू स्क्वेयर्स असी क्लब कर लाँगे ए वाली वैल्यूज़ नू प्लस बी वाली वैल्यूज़ नू. सो दिस कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू स्क्वेयर्स. सो जस्ट अप्लाइंग द वैल्यूज़. असी ये सारा कुछ करके नहीं दिखाना. वी जस्ट हैव टू मैंशन दैट कि रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर 2n, रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर एवरी प्राइम that is congruent to 1 modulo 4. Therefore the result is applicable for the product of two factors. Therefore n can also be written as, n is made up of these two values na, so n is also possible to write it as a square plus b square. So n is d square into n लैके चले सी आपां. इस असी n नू लिख लिया a square b square. So d square a square plus d square b square हो गया. This means n is also written as a sum of two squares. It is also written as ad square plus bd square. You can write ad to be some other prime n. इनू असी c1 square या c2 square भी कह दिए. So basically it is written as a sum of two squares. So this proves our result कि जे असी n ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ n ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ congruent to 3 modulo 4 ਹੈ, they occur to the even power, then it is possible to write this as a sum of two squares. क्योंकि ਜਿਹੜੇ rest of two factors ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 raised to power n ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ n ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ those factors ਹੈ which are congruent to 1 modulo 4, and we have already proved the result for 2 raised to power n and for the prime numbers which are congruent to 1 modulo 4. Applying those theorem, we conclude that this n can also be written as the sum of two squares.